हेलो, नमस्कार मित्रों। आज मेरा लेक्चर सीरीज 12 शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत मैं आपको सिंपल नॉमेनक्लेचर जिसपे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो कैसे किया जाता है डिस्कस करूंगा। कल मैंने आपको बताया था डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर मैंने बताया था। उसी संदर्भ में मैं आज आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बताऊंगा किस तरह से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पर वर्तमान हो तो नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है और नेमिंग में क्या होता है, तो कल मैंने आपको लिस्ट दिया था, तो आप देख लीजिएगा। तो सिंपल वे में हम लोग कंपाउंड का नाम जो लिटरेचर करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप एंड से जो कार्बन होता है उसी से पूरे लॉन्ग चेन कार्बन का नंबरिंग किया जाता है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन रहेगा and numbering will be done from the functional group present carbon atom in the case of alcohol and in the case of halogens. But if the functional group present having carbon atom, just for aldehyde, carbonic acid, in that case the numbering will be done from the functional group carbon atom. तो मैं आपको ये एग्जाम्पल से स्पष्ट करूंगा ताकि आपको क्लियर होगा। तो जैसा कि आप देखें ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, कंपाउंड है। नेम मीनिंग विथ ऑल, कल मैंने बताया था नेम मीनिंग विथ ऑल। तो दिस इज कंपाउंड ऑफ 2 कार्बन, तो इथानॉल, 1 कार्बन atom ethanol, 3 कार्बन atom alcohol. The OH group is present on this end of the carbon chain. In that condition, numbering will be held from this carbon atom 1, 2, 3, 1, 2 and 3. So the name of this compound will be 1-propanol. 1, this is this parent group is group 1-propanol. Similarly, in this case you see here, this is alcohol having 3 carbon atoms, 3 carbon atom chain. So the numbering will be had from this end, or you can done by this end also because the OH group is in the middle part. So 1, 2, 3, 2-propanol. This is 1-propanol, this is 2-propanol. Now, if this compound is like this, the numbering will from this 1, this end, because OH group is nearest to this carbon atom. This OH group is nearest to this carbon atom. 1, 2, 3, 4. 2-butanol. This compound is 2-butanol. So this is your 1-propanol, 2-propanol, this is 2-butanol. Now if this compound, this OH group is present on this carbon atom, then you will do from 1, 2, 3 and 4. So always numbering will be done from the nearest functional group carbon end in the case of alcohol, you see. अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जिसपे आपको अल्कोहलिक ग्रुप भी हो और साइड चेन भी हो। जब अल्कोहलिक ग्रुप हो और साइड चेन हो तो आपको अल्कोहलिक ग्रुप कार्बन एंड से ही नंबरिंग करना है।
See this compound. Alcoholic group is present on this carbon atom, and there is side chain. Then 1, 2, 3. This is side chain. Methyl group. So 2 methyl, 1 propanol, 1 propanol, 1 propanol. It's simple nomenclature. 2 methyl, 1 propanol. Now, see other compounds. If the compound is like this, CH3, 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 CH2OH. 1, 2, 3. So, on second position, there are 2 alkyl group, methyl group. If similar type of groups are present on the same position, then repeat the position and di, tri, tetra were used. If those similar groups are present, then di. If these 3 similar groups are present, then tri, and if 4, then tetra. See the way of nomenclature and repeat the position. Just for example here, 2, di, methyl, 1 propanol, 2 dimethyl, 1 propanol, 2 dimethyl, 1 propanol. This simple way. So if same type of group will present on different positions, then see here. See this compound. 1, 2, 3, and 4. Then 2, 3 dimethyl, 1 butanol. 2, 3 dimethyl, 1 butanol. This is simple way of nomenclature in the case of alcohol. Now we see in the case of aldehyde, the aldehyde group. Aldehyde. This is aldehyde group. Name is al. One carbon aldehyde, methanol. Methanol. 2 carbon aldehyde, ethanol. This compound is also known as formaldehyde. This is formaldehyde. Formaldehyde. This is acetaldehyde. Acetaldehyde. But this is IUPAC name. Ethanol. This is formaldehyde. This is acetaldehyde. So you must know the aldehyde is present in any carbon chain, then name meaning with al. If this is ethanol, acetaldehyde, this is ethanol. Now this is propanol. This is propanol. 3 carbon compound. From 3 to prop, and this is al. This is propanol. Similarly, in the case of carbonic acid,
carbonylic acid. Name ending with oic acid. Oic acid. Now, the first carbon acid is ethanoic acid. Ethanoic acid. This is also known as formic acid. Formic acid. The second carbon acid is this is ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid. This is also known as acetic acid. Acetic acid. Acetic acid. Similarly, 3 carbon carbonylic acid is propanoic acid, butanoic acid. In this way, you can name the carbonic compounds. Compound having COOH group, name ending with oic acid. Simply, I am going to discuss you the compounds having one function present in the carbon chain. In last class, in former classes, we will also discuss you the nomenclature of the compounds having multi-function. तो हम बाद में देखेंगे. पहले सिंपल वे में आप जान ले ये फंक्शन ग्रुप अगर रहता है तो कंपाउंड का सिंपल नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है. ये सीख हुआ. नेक्स्ट NH2. This is amine. One carbon, methanamine. Methanamine. 2 carbon. This is ethanamine. Ethanamine. 3 carbon, propanamine. Now, if the amino group present in the middle of the carbon chain like this, NH2, then 1, 2, 3, 2 propanamine, 2 propanamine. Similarly, you can name the amine compounds. Now, nitro compounds. Nitro. This is nitro. Nitromethane. 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 Nitroethane. Nitroethane. Now, if this nitro will middle of the carbon chain, in that condition, it will be like this. See here, the nitro group is present on the second position of the carbon chain, and the parent carbon chain is prop. 1, 2, 3. 3 carbon chain. 3 carbon chain is prop, and the functional group containing at second position. Then 2 nitrobutane. 2 nitrobutane. So you see here, OH functional group, aldehyde functional group, ketone carbonic acid functional group, amine functional group, and nitro group functional group.
Now see the ketone compounds. This is ketonic compound having both side alkyl group. One can ask you, what is difference between the aldehyde and ketone? Both groups have CO. In the case of aldehyde, CO. CO is present in both compounds. But the basic difference between the aldehyde and ketone is, in the case of ketone, both sides are alkyl group. But in the case of aldehyde, there is one alkyl group and other is hydrogen. You must know. One can ask you that aldehyde and ketone both have CO group. Then what is difference? The simple difference is that aldehyde having one alkyl group and one hydrogen. In the case of ketone, both sides of CO group there are alkyl. Now, name ending with O-N-E. Just you see here. This is ketone of 3 carbon atoms. 3 carbon chain. This is ketone of 3 carbon chain. Now, the compounds having 3 carbon atoms chain are known as prop. So the parent compound is prop, and there is ketone, then propanone. Propanone. This is propanone. This is also called acetone. This is also called acetone. Then this is propanone. The compound having 3 carbon atom is propanone. If the compound is like this, this compound has formed by 4 carbon chain. 1, 2, 3, 4. Now just you know that compound having 4 carbon chain, atom chain, are called bute. This is bute. But the CO group is present to the nearest end of this methyl group, then numbering will run from 1, 2, 3 and 4. क्योंकि इस कार्बन से ये नजदीक है, इससे नंबरिंग यहाँ से करेंगे. आप याद रखेंगे, कभी भी कीटोन ग्रुप का नंबरिंग CO से नहीं करना है. कभी भी कीटोन ग्रुप का लिटरेचर में नंबरिंग जो है वो CO से नहीं करना है. बट अल्डेहाइड ग्रुप में ऑलवेज नंबरिंग CH2 कार्बन से ही करना है. ये अंतर है. जैसे मान लो कि किसी भी कंपाउंड में अगर अल्डेहाइड हो तो नंबरिंग बराबर यहाँ से होगा, लेकिन कीटोन हो तो यहाँ से कभी नहीं होगा, बराबर एंड से होगा. यही डिफरेंस है. इस कंपाउंड का नाम होगा 2-butanone. 2-butanone. तो जिस एंड से नजदीक होगा, जैसे कंपाउंड को और देखिए, इस कंपाउंड ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का है. तो 5 कार्बन से पेंट होता है. तो 1, 2, 3, 4, 5. Then 3 pentanone. So this is simple nomenclature of the aldehyde, carbonic acid and ketones. Very simple. So do the practice. Now in the case of ether, the functional group is O, having both sides alkyl group. One can ask you,
What is difference between ether and alcohol? Alcohol has also O group and ether has also. But the basic difference is that in the case of alcohol there is hydrogen. But in the case of ether, both sides is alkyl group. Both sides is alkyl group. But in the case of alcohol, there is only one alkyl group and one hydrogen. Just you see in the case of aldehyde and ketone. In the case of ketone, both sides alkyl group, but in the case of aldehyde, one side alkyl and second side hydrogen. Similarly, in the case of ether, both sides alkyl group present. Now, simple way, oxide, name ending with oxide. Just to see here. Methoxy, methoxymethane, methoxymethane, or you can say methyl methoxide also. Methyl methoxide, methyl methoxide or methoxymethane. Now, in trivial name, dimethyl ether, dimethyl ether, dimethyl ether. But this is not IUPAC. This is IUPAC. Methoxymethane or methyl methoxide. Now, if there is compound, you can see in the case of CH3. Now, if the carbon chain present on the both side of this O group, then oxygen will be associated with the larval carbon chain side. Now this is wrong, this is right. Mind it. If both sides of carbon chain present on the O group, in that condition, the oxygen will be associated having the carbon chain larger. Just indicate, see here, one side 2 carbon atom, other side only 1 carbon atom, then the oxygen will be go from right side, 2 carbon atom. If oxygen will go from the left side, this is wrong. Now this is right, तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है. Then this is methyl ethoxide, methyl ethoxide, methyl ethoxide, methyl ethoxide, methyl ethoxide. Now, it can also be said as ethyl methyl ether, but not IUPAC. Ethyl ether. Now, in this case of this compound, both sides having 2 carbon chain, then ethoxyethane, or diethyl ether. So today I have discussed the simple nomenclature of the compounds having one functional group. In the case of alcohol, aldehyde, ketone, ether. Now, in the case of halogen groups, in the case of halogen group, that can be fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Like this, halogen groups. So, see here, chloromethane,
मीथेन। Two chloro, 1, 2, 3. This is 2 chloro propane. Similarly, if अगर F हो then fluoro, if there is Br then bromo, and if iodine then pyro. Just this compound. Dichloromethane. Dichloromethane. This is trichloromethane. This is chloroform also. This is chloroform. Chloroform. If there is 4 carbon atom per halogen, this is this, and tetrachloromethane. Tetrachloromethane. Now, here I discuss you the compounds having single functional group. That will be halogen, that will be alcohol, that will be aldehyde, that will be ketone, that will be ether, and so on. ये ईथर तक आप देख लीजिए। ईस्टर के केस में हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको मैं स्पेशली बताऊंगा ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में स्पेशली ईस्टर के बारे में लोग चलेंगे। तो ये आपने देख लिया, ये सिंपल वे है कि किस तरह से हम लोग सिंगल फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन चेन पर हो तो नंबरिंग कैसे करते हैं और उसका नाम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको हम व्यक्त करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर आप बड़े मल्टी फंक्शन ग्रुप का नंबरिंग और नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अभी मल्टी फंक्शन ग्रुप को आप ट्राई मत करें, अभी सिंगल का ही ट्राई करें और सिंपल फंक्शन वन फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड का नाम आप लिखें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आपको बड़े बड़े कंपाउंड का नाम हम इस पे लिखने आ जाएगा। आप शुरू में ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम शुरू करेंगे तो वैसी स्थिति में आपको गलत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जैसे मल्टी फंक्शन ग्रुप हो आप समझ नहीं पाइएगा। तो आप बहुत प्राइमरी लेवल पर इसकी बात करें, सिंपल सिंगल फंक्शन ग्रुप को ट्राई करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन चेन कंपाउंड्स का, जैसा मैंने आपको बताया। इतने कंपाउंड में आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारा काम आपका चल जाएगा। यही सब फंक्शनल ग्रुप को मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड पर भी और साइक्लोअल्केन पर भी, अल्कोहलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो मित्रों आप इसको प्रैक्टिस करें और सिंपल नोमेनक्लेचर यहाँ पर क्लियर होगा। प्रैक्टिस करके आप सेल्फ उसको देखें, सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें और सेल्फ लिखें, कंपाउंड को अपने से बनाएं, बना करके उसका नोमेनक्लेचर करें और उसको देखें कि आपका कंपाउंड करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जितने आप अपने से काम कीजिएगा, सेल्फ वर्क कीजिएगा, उतना ही आपका निखार आएगा और जितना ही आप दूसरे पर निर्भर करेगा, आपके बदले हम काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं आने जाने का है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार आप इन कंपाउंड को प्रैक्टिस करें, कागज कलम में प्रैक्टिस करें, अपने से कंपाउंड बनाएं, फंक्शन ग्रुप को अपने से प्लेस करें और प्लेस करने के बाद इस मेथड से आप नोमेनक्लेचर करें और उसको फिर देखें, अपने से उसको देखें भी, परखें भी कि मेरा दिया हुआ लिखा हुआ कंपाउंड, लिखा हुआ नाम सही हुआ कि गलत हुआ। खुद कंपाउंड बनाए भी आप खुद उसको टेस्ट भी करें, आप खुद टेस्ट करें कि आपका कंपाउंड सही लिखा है कि गलत लिखाया। चूँकि आप खुद लिखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद आप टेस्ट भी करेंगे तो आप पे निखार आएगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप कंपाउंड को ठीक समझ पाएंगे। अदरवाइज आप टीचर पर निर्भर रह जाएंगे, टीचर ही सब कुछ करेगा, टीचर ही पढ़ेगा, टीचर ही पढ़ाएगा, टीचर ही लिखेगा,
आप चुपचाप सुनेंगे तो सुनने से कुछ प्राप्ति नहीं होता है। किसी भी विद्या को सुनने से अधिक प्राप्ति नहीं होता है। विद्या को अभ्यास करने से आता है। जितने विद्या को अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपको आएगा। सुनने से विद्या 2%, 3%, 4% आता है। बार बार अभ्यास करने से ही विद्या प्राप्त होता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार खुद अभ्यास करें और दुनिया के सबसे बड़े से बड़े कंपटीशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें। आप ये मत समझें कि मैं दूसरे पर डिपेंड हूँ, मैं टीचर पर डिपेंड हूँ। पहले कोचिंग क्लास नहीं चलता था। पहले लड़के खुद पढ़ते थे, खुद मेहनत करते थे। ये तो शुरू हुआ 90s के बाद, बाजारीकरण हो गया शिक्षा का। तो शिक्षा के बाजारीकरण से लड़कों का नॉलेज का स्तर गिर चुका है। खुद तो प्रैक्टिस करते नहीं हैं, खुद तो आप सेल्फ हेल्प कीजिए, अपने को अपने आप हेल्प कीजिए, सेल्फ हेल्प कीजिए, अपने को आप अपने से हेल्प कीजिए, तो आपका निखार आएगा। आप टीचर पर बहुत निर्भर नहीं रहिए। सिंपल वे में जो आपको बताया इस रास्ते को पकड़िए, किताब को देखिए, तो सारे वर्कआउट को कीजिए, सारे प्रॉब्लम को कीजिए। प्रॉब्लम को कीजिएगा, आपके ज्ञान में निखार आएगा, आपको लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप एक्सप्रेस कीजिएगा। इस तरह से सैकड़ों कंपाउंड मैंने आपको बताया, सबको लिख डालिए।